Okay, so hello everyone. Welcome to the session. Delighted to have you all join us today for this exciting and insightful session. So it is our pleasure to introduce Ms. Aarushi, so an accomplished startup mentor and expert in business planning and marketing research. And my name is Anil Kumar, startup manager at Rajhasi Incubation Center. So we are here with some real life techniques and methods to help you with your pain points with revenue 2x week one session. So on sales techniques and customer engagement with her extension and experience in driving successful business strategies, Ms. Arushi will share valuable insight and practical tips on sales technique and customer engagement. So providing startups with a tool they need to effectively connect with the customers and boost sales. So this session is part of Rise Hansi Incubation Center, going ongoing commitment to empowering startups with knowledge and resource to thrive in the competitive market. So we look forward to an engaging and productive session ahead. So let's take full advantage of this opportunity to learn and grow. So without further delay, I would like to invite Arushi ji. So over to you, Arushi, please. Thank you so much for a wonderful introduction, Anil. Greetings to all the founders, entrepreneurs, and the professionals over here. I hope everyone has their lunch and energized now for the session. So, apart from such a nice introduction of mine, I want to add a bit of that my mission as a startup mentor. So, or enabler is to support founders in their startup journey from validating their ideas to providing the assistance in their execution process by helping them in their forming in the marketing and sales strategies, and also getting more investor meeting and their yes for investing in your startups. Now let me focus on one of my most important mission why we are here right now, to help you to develop strategies and techniques that not only drive sales but also foster meaningful long lasting customer relationships. Now could you please present the slides? Now, let me enlighten you with the topic that we are discussing right now is sales techniques and customer engagement. Now, let me enlighten you with the objective of these sessions. Could you please go to the second slide? Yeah. So, the first thing that we are going to get an effect over here, like optimizing your sales process, basic sales techniques, strategize to engage with your customers and real world applications, and will provide you the assignment in the later on. Now let's start by understanding the sales funnel. But before that, let me ask you, what is the sales according to you in a very simpler terms? Anyone? You can write on the chat box. Okay, let me give you a simple definitions. Sales refers to all the activities involved in selling a product or service to a customer, or if it is B2B, then business. Now let's drive the process from the statement itself. Activities that we are considering here can be divided and categorized into four stages. That is AIDA, which means attract or generating the awareness, interest, decision, and action. You must have heard a cliche line through a very significant in, which is very significant in marketing and sales, that treat your customer as a king, right? So these four stages, ये जितनी भी सारी four stages हैं, we have designed in a such a way which brings you the customer perspective, which is very crucial. So you must be aware about your prospect and target audience, about the product and services that you are offering, how the product or service are addressing their pain areas, and how they can save their time. And the most common tool today is the social media to boost awareness about your product. Now imagine a prospect who stumbles across your social media and they immediately ponder and relate with your product as you're focusing on emotion rather than engaging with the selling your product. That's where the first become aware about your product while seeing or watching the social media ad, right? And if they click on that ad and start browsing your website, checking out the features of your product, that is called the interest phase. जब वो आपके वेबसाइट पे चले गए, इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया, अवेयरनेस आपने क्रिएट करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से,
There are multiple marketing tools. So the first marketing tools that is very essential is social media to generate the awareness about your product. आपने उनका पेन पॉइंट एनालाइज किया, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बताई, और जब उनको वो एड उनके इंस्टा रील या किसी पोस्ट पे दिखा तो दे गॉट इंट्रीग्यूड, उनका इंटरेस्ट जगा एंड दे क्लिक्ड ऑन दैट एड. That is the interest phase. Now, very crucial and the most confusion part is to make the decision. जनरली इन इंडिया पीपल डू द रिसर्च. इंडियन कम्युनिटी क्या होती है, नहीं ये प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ये प्रोडक्ट मुझे मेरे कॉम्पिटिटर्स या इस कॉम्पिटिटर से अच्छा मिल जाएगा. वेदर इट इज इन ऑफलाइन और एन ऑनलाइन मार्केट, दे कंपेयर योर प्रोडक्ट टू द कॉम्पिटिटर्स by checking their complimentary offers, discounts, quality, quantity, and read the reviews, look for or the alternative options, right, which is applicable in both offline भी ऑनलाइन भी. ऑफलाइन भी अगर आप मार्केट में जाओ, सपोज एक कपड़ा लेने भी जाओगे आप, तो आप वहां पे जाके उसकी क्वालिटी चेक करोगे, उसका प्राइस चेक करोगे, देन यू विल बी गोइंग टू विजिट अनदर शॉप to check the same products in the same quality. Then you compare it and then you buy the best suited product according to your need, right? So that's how you need to understand your customer. Once they develop the decisions, once the customer develop the decision, नहीं मुझे इसी product या यही product लेना है, इसी founder से लेना है and all, then comes a very simpler process, that is the action process. And when all the action process is just like buying decision and completing your process. Now, by understanding the sales process, you must feel how we can optimize this, how we can optimize our sales funnel for our business, which is very crucial. And how you can do it by implementing all the 4 stages, which is very seamless. For example, if your leads are dropping off, right, if your leads are dropping off at interest stage, what you can do, maybe your website isn't answering their question or providing the value enough, and they leave your site without सपोज इंक्वायरी फॉर्म आपने अपनी वेबसाइट पे अटैच किया और वो विदाउट फिलिंग द इंक्वायरी फॉर्म वो चले जाते हैं. Now what you can do, you can integrate a chatbot into it, and which can answer the FAQs, which can answer their queries promptly. That will also increase their engagement but and also improve your conversion rate. Now you must be thinking, Aarushi, we have already aligned our strategies with our customer journey. Now develop a simple and seamless process. But how we can implement this sales techniques, and why we are going to use them, what is the need? So there are simple and basic 3 sales techniques that I'm going to tell you about, which are consultative selling, solution selling, and upselling and cross selling. Consultative selling क्या होता है? As the name suggested, consultative. Approach your customer as a trusted consultant or advisor. आपको उनका पेन पॉइंट, उनका पेन एरिया, उनका कंसर्न पहले एनालाइज करना पड़ेगा. हाउ? बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन. लाइक यू कैन टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. Suppose me as a consultant and a pitch deck expert, I simply ask the founder what challenges you are generally experiencing while developing your investment collaterals. Are they aware about the fundraising process and investor preferences? Is this is your first fundraising round? Because if it's your first fundraising round, you are not well experienced in the process of the investment, right? This open up the discussions and where I can showcase how my services can resolve their specific issues and create a value in an investment journey. Now once I identify their challenges and the pain point areas, and I'll consult them how you can improvise it, how I can be a better help and create a value for you. Now the second is solution selling. Solution selling may we are majorly focusing on how your product or services is resolving the customer problem rather than just listing out your futures. Instead of saying like we help you in creating impactful pitch decks and financials, we can say that we create compelling pitch decks, build robust financial models, valuations tailored to your investor preference,
and also conduct thorough market research using credible and reliable resources. Our goal is to turn your ordinary pitch deck and presentation into a captivating and impactful story. Now, the third is upselling and cross selling. What upselling and cross selling mean? Upselling is suggesting or recommending a higher end product, and cross selling is offering a complementary products. For example, I can recommend a structured business plan and a market research report. Or for the cross selling, I can say that I can help you in validating your idea. Now, apart from the basic sales techniques, we all focus on lead generation techniques. Obviously, in the sales, lead generation is really play a huge and pivotal role. And could you please move to this next slide? So, the how the sales focus on sales representative focus on the lead generation. So, let's talk about the lead generation techniques. Generally people starts from the sales their sales journey from the cold outreach, which includes cold emails, cold calls, and LinkedIn messages. I know you will say these are the traditional and outdated method, but please बात मानिए मेरी, these all are the effective tools. Yes, it can tremendously change your sales strategies and improve your lead generation techniques. How? If you are going to personalize them. अगर आप अपने LinkedIn को के messages को personalize कर लेते हो, that will act an effective tool, because LinkedIn is an effective tool for your lead generation. LinkedIn is not just a connecting for the professional, is not just nowadays is not just for कि job देखने के लिए नहीं. It's a tool which can uh, give you a wider perspective, which can help you in your networking, which can help you in making your brand awareness, a lot of things, right? So I must tell you that LinkedIn is literally an effective tool for your lead generation. So all you need to do is research clients achievements, their pain points, and craft your messages by using the techniques that I have stated above: AIDA: awareness, interest, desire, to capture their attention of your customers and drive their actions. Another is inbound marketing. Inbound marketing is the organic way to attract leads by offering the valuable contents like blogs, webinars, ebooks, video generated content. I hope you have heard about value first approach. So what value first approach is? Where you are creating a value by offering some free resources, free consultations to showcase your expertise and understand your customer needs, and providing them with actionable insights. This can also help you to maximize your leads. Okay, second, optimizing your website with SEO. For example, you can add keywords, you can create a blog page where you are addressing your common pain points of your customers and target audience, and emphasize more on how these pain points can be addressed with via your product, how you can resolve all the pain points of them through their products and services. And most important, leverage your social media to build a brand awareness. Social media is no longer just a place to connect with friends, it's become an essential digital marketing tool for business of all the sizes, be it a startup, be it a business, be it a top manage, be it for a top personal branding. It can help you to connect with a wide audience and improve your brand reputation also, and also enable you to interact with your customer in a real time. I always recommend every founder who reach to me to create their social media page, like one for their own and one for their brand, because you have heard about it that people trust on people more rather than on a product. So as you are the face of your brand, your personal brand is really necessary. Now moving forward, the best part is what is the effective sales pitch structure of the sales pitch deck and sales pitch deck's best practice, right? So let me give you an example. Recently my team has created a sales pitch deck.
that needs to be presented in front of the college authorities, and the target audience are students, right? So like I have initiated the storyline. Despite being the second largest English speaking nation, only 1 in 10 Indians can speak English fluently, and 97% of graduates lack the required English for corporate jobs, and making 51% unemployable. This communication barrier is a threat to students' professional success and institutional reputation. Now here, now here you have analyzed what I'm focusing more on. I have started up the pitch deck with the problem statement and identify the student pain areas. Now, introducing XYZ company, the solution to bridge the communication gap. We have introduced XYZ, a one-on-one live video platform designed to help learners, students improve their English fluency with expert tutors. Here we are presented our product as the solution. So here we in a one liner we are focusing more on the solution, that how we are bridging the communication gap. Now the third step, we should highlight the tangible benefits as we are presenting it to college authorities. तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो आपके लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करेगा, कैसे बेनिफिशियल, राइट? सो कॉलेज अथॉरिटीज के लिए सबसे बेनिफिट पॉइंट क्या होता है कि अगर उनके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, क्या रीजन है उनके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है? सो हेयर वी आर हाईलाइटिंग दैट दिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम वी आर कमिंग अप विद, कैन इंक्रीज योर प्लेसमेंट रेट and enhance your college reputation and enable your students to overcome the fear of speaking and build confidence with our comprehensive training program, right? Now here we have showcase the benefits. Now most important thing, this and significant slide is CTA, call to action. You can end with the clear next step, like let's schedule a one-on-one demo to transform your students communication skills to the students, right? So apart from these, there are another best practices for sales pitching. Could you please move to the second slide? Yeah, another best practice for sales pitchings are, from starting of the session to till now, I'm focusing majorly on one more important and significant sales and marketing practice, that is, yeah, that is understanding your customer needs and analyze your customer behavior. Ask your customer an insightful questions to understand their specific challenges and pain points, like how does your how does your current solution impact your operations, how your product is adding the value in your customer life, what extra benefits your product or service provide. So recently I have came across with the tool name called Prezi.ai. I hope you guys have heard about it. So, as I told you, you all are aware that social media marketing and branding is an essential tool, and each influencer, content writer, even the founders like us who want to build their personal brand are struggling in developing the appropriate content, post video reels for their target audience, and either hassle with moving either from the chat GPT or asking your content writer to provide the content so that you can shift it to, you can provide the content and you can shift it to your designer से बोलो कि भाई इसको विजुअली अच्छे से क्रिएट करके दो, फिर आप मार्केटर से बोलो कि भाई जनरेट करो एड, एंड द लिस्ट कंटिन्यूज. देयर इज अ वेरी हैसल प्रोसेस. Now to reduce the time and save your time, they have addressed the pain point of all the social media influencers, founders like us, and develop a tool called Prezi.ai, which is an integration of ChatGPT, Canva, Hootsuite. The use cases is like text to video, text to carousels and posts, or even they can help you with generating your ads and publish or schedule your content post. Isn't it amazing? You can also utilize it, right? Now, once you understand your customer needs, now you have to customize their pitch based on their industry market trends, customer segment, company size, and as well as your traction, like number of users, revenue surpassed till now, right? And please avoid one size fits all.
approach, which is called a method that is not tailored for individual needs. Now, moving to handle the sales objections. And Arushi, one of the startup are requesting to mix Hindi also in comment chat box. Okay. ओके, सॉरी। ओके, सो हम सेल्स ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करेंगे? फाउंडर्स, यू मस्ट हैव हर्ड दीज स्टेटमेंट्स कि योर प्रोडक्ट इज टू एक्सपेंसिव, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अभी जिस जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अप्रोप्रिएट, हम खुश हैं उससे, वी आर हैप्पी विद आवर करंट प्रोवाइडर, एंड हम इतनी जल्दी डिसीजन मेक नहीं कर सकते। आप अगर आप किसी भी कस्टमर को अपने रीच आउट करते हो, बोलते हो ये सर्विस लेने के लिए, सो दे वर लाइक बायर्स, दे वर लाइक कि हाँ अभी हम दूसरे लोगों को भी अप्रोच कर रहे हैं या अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। बिलीव मी, आई हैव हर्ड दिस मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार मैंने ये चीज सुनी है। बट इन सारी चीजों को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? The key is to listen, acknowledge, and reframe. We can handle all these objections by just implementing these techniques. What are these techniques? Are active listening, acknowledge them, and reframing. Active listening is पहले आप अपने कस्टमर की पूरी तरीके से प्रॉब्लम और उनके जो इश्यूज हैं वो अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, अच्छी तरीके से सुन लीजिए, बीच में इंटरवीन मत करिए। लेट द कस्टमर फुल्ली एक्सप्लेन देयर कंसर्न्स, इश्यूज एंड व्हाट आर देयर डिमांड्स फ्रॉम यू। एक्नॉलेज देम, empathy, show empathy and validate their concerns, be in their shoes to understand their concerns. Basically आपको उनकी जगह अपने आप को रखना होगा, राइट, एंड देन एनालाइज कि वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। उसी तरीके से यू नीड टू रिफ्रेम योर सेल्स स्ट्रैटेजीज। आपको एक मेथड यूज होता है, फील, फेल्ट, फाउंड मेथड। सपोज इफ समवन सेज, आप एक SaaS प्लेटफॉर्म के फाउंडर हैं और किसी ने कह दिया कि आपका सॉफ्टवेयर बहुत ही एक्सपेंसिव है, योर सॉफ्टवेयर इज टू एक्सपेंसिव। नाउ इन द सेल्स स्ट्रेटजीज, customer can use the word expensive, but you do not have to use the word expensive. Use the luxury word, like yes, our product and services is premium because we are offering a quality product, right? And if you are willing to negotiate, आप ऐसे बोल सकते हैं कि yes, I understand how you feel, आप कैसा feel कर रहे हैं, and other customer felt the same initially, but they have found that it helped them save more money, time, and in the longer run reduce the manual work. उनका टाइम भी बच जाता है, मनी भी बच जाता है, और वो मैनुअल वर्क जो होता है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का रिक्वायरमेंट होता है, वो सारे टास्क रिड्यूस हो जाते हैं बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। एंड आप उनको नंबर से अपने बैक कर सकते हैं। डोंट टेक आवर वर्ड्स, हियर आर द नंबर्स एंड टेस्टिमोनियल्स फॉर आवर ट्रस्टेड क्लाइंट्स। तब आप उनको अपने क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल्स, रिकमेंडेशंस, अपने नंबर्स दिखा सकता है कि इतने मेरे रेवेन्यूज बन गए हैं, इतने मेरे पास अभी कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेरा ये प्लेटफॉर्म ले लिया है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सब कैसे हो सकता है? आपको अपने कस्टमर से रेवेन्यू, कस्टमर से टेस्टिमोनियल्स चाहिए है, रिव्यूज चाहिए, ये सब कैसे हो सकता है? बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स, एंड दैट नॉट ओनली हेल्प यू टू गेट द न्यू कस्टमर बट ऑल्सो हेल्प यू इन रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, which can be very helpful. Now, there are 3 approaches that we usually follow by building the customer relationships. And I tell you, if you are building your customer relationships and if you are engaging with your customers, it can leads to your longer term success. Believe me or not, long term success is in sales comes from building strong relationships with your customers. अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, आपको अपने कस्टमर्स को, अगेन द क्लीशे लाइन, ट्रीट योर कस्टमर एज अ किंग. Now, it can develop through 3 approaches: customer centric approach, personalization, and follow up. Now, what is customer centric approach? So you need to focus on long term relationship, just not one time sales. आप ये मत सोचो कि बस मुझे ये वाली सेल्स करनी है, फोकस करो कि इसके साथ मैं आगे अपने जो भी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे या जो प्रोडक्ट उन्होंने वो परचेज करने जा रहे हैं उसमें एडिशंस होंगे, उन सबको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, इससे अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा कनेक्शन बना के. सो
regularly, or if your product demands or service demand weekly, you can engage with your customer to understand their evolving needs. Suppose again, you are a founder of a SaaS business, you should continuously check in with your customer to see if your solution is still working appropriately or not. राइट, आपको देखना पड़ेगा कि कोई डिफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, कोई बिकॉज इट्स अ सैस बिजनेस, कोई सॉफ्टवेयर में इशू तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लाइक हाउ योर सॉल्यूशन इज स्टिल वर्किंग appropriately or not, if they need additional features. और जब उन आपको पता चल जाए, आपने एनालाइज कर लिया हो कि हाँ इनको एडिशनल फीचर्स की जरूरत है, नाउ व्हाट यू कैन डू टू मेक देम गुड रिलेशनशिप विद देम, गुड कनेक्शन विद देम, आप ये बोल सकते हैं कि एज यू आर आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, हम आपके लिए ऑफर लाए हैं, हम आपको ये इतने प्राइस में देंगे, उनको आप जितना ऑफर, डिस्काउंट्स, लॉयल्टी, बोनस ये सब देंगे, बेनिफिट्स दिखाएंगे कि ये फीचर और ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये न्यू प्रोडक्ट का एडिशन आपके लिए क्यों ज़रूरत है, उतना ही आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा. Now the another thing is personalization. As I have already stated you, personalization in the above, कि लिंक्डइन मैसेजेस को पर्सनलाइज कैसे कर सकते हो, वैसे ही आपको अपने कम्युनिकेशंस को पर्सनलाइज करना पड़ेगा. अब हम क्या करते हैं कि कोल्ड ईमेलिंग में या किसी में भी हम एक मैसेज स्ट्रक्चर कर लेते हैं, या अभी कॉल पे भी एक आपने अपने टेलीकॉलर को या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव को एक सेल्स स्क्रिप्ट डाल दे दी और वो कंटिन्यूसली वही रिपीट कर रहे हैं. नहीं, आपको इस चीज को पर्सनलाइज करना पड़ेगा. हाउ? बाय कस्टमाइजिंग योर कम्युनिकेशन, बाय यूजिंग देयर कस्टमर नेम, रेफरेंस टू देयर पास्ट इंटरेक्शंस, अचीवमेंट्स, देयर स्पेसिफिक नीड्स. मैं जैसे लाइक व्हाट आई स्टेटेड टू माय बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स व्हाइल रीचिंग आउट टू एनी ऑफ द क्लाइंट, चेक आउट देयर लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन प्रोफाइल पे आप चेकआउट करो उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या पोस्ट उन्होंने लिख रखे हैं, क्या नीश है उनकी, so that we can research about that and build our interaction, build our communication skills and build our script accordingly. राइट अब आप देखो पर्सनलाइज ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स आपको मिलते हैं. सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं मिंत्रा का. सो मिंत्रा यूजेस पर्सनलाइज मार्केटिंग एंड रिकमेंडेशन मेथड, so they offer the discounts on the product that you already like. आपने जो प्रोडक्ट को स्क्रॉल अप किया है वही आपको मिलेंगे. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द एग्जांपल ऑफ जोमैटो. आपने देखा है जोमैटो के स्वीट और हिलेरियस मैसेजेस विच एवरीवन लव्स, राइट? सो वो पर्सनलाइजेशन आपको भी अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करना होगा. नाउ द लास्ट, फॉलोअप्स. फॉलोअप्स इज वेरी क्रूशियल. जब आप एक क्लाइंट से बात कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि हम दूसरे क्लाइंट पे मूव ऑन कर जाते हैं, राइट? सपोज आपकी एक सेल्स हो गई, खत्म हो गई, हम दूसरे क्लाइंट पे हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और हम जो जिस क्लाइंट से हमने फॉलोअप किया, जिस क्लाइंट ने हमारी सर्विसेज ली, हम उसको भूल ही जाते हैं, right? Neither we send a thank you email nor we connect with them about the feedback. ये बहुत founders को मैंने देखा है ऐसे करते हुए. सो अ वेल टाइम फॉलोअप कैन लीड टू द कन्वर्जन. वर्ड ऑफ माउथ आप लोगों ने सुना ही होगा. अगर आप अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करोगे अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से, तो वो ही आपकी वर्ड ऑफ माउथ करेगा, विच कैन लीड्स यू टू अटेन मोर कस्टमर्स, right? So suppose I can give you the example. You can share a thank you email after demo meeting. आप उनको thank you email बोल देते हैं, that pleasure connecting you with you. Now let's move on to the next step and offering additional information about your product, or like make the conversation going up. Right now, how we can implement all this by using the customer engagement techniques, that is really crucial. अब जितने भी सारी मैंने आप लोगों को बताए, अब उसमें से टेक्निक्स आप क्या यूज कर सकते हो, so that you can build your customer relationship, engage customers and engage with the customer. So I must tell you, engaged customers are the loyal customers. Keep them coming back with your regular communication and personalized offers, right?
आप जितना उन लोगों से कनेक्ट करोगे, पर्सनलाइज करोगे उनके ऑफर्स को, डिस्काउंट्स या लॉयल्टी, या उनको बेनिफिट दिखाओगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, उतना ही वो आपके ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स बने रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? देयर आर थ्री ऑप्शंस. फर्स्ट, proactive communications. So either you can create a community, and again social media, you can add about your product updates in your LinkedIn, Insta, right? Send the regular product updates through newsletters, through the emails, tips on using the product effectively, कैसे आप हमारा प्रोडक्ट्स यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको ऑफर, न्यू ऑफरिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के बारे में बताना कि दैट यू कैन इम्प्लीमेंट लॉयल्टी रिवॉर्ड्स फॉर रिपीट परचेज, रेफरल डिस्काउंट्स एंड एक्सक्लूसिव ऑफर्स. एग्जाम्पल, जैसे आपने 10 या 20% डिस्काउंट दे दिया ऑन फ्यूचर परचेजेस बाय रेफरिंग टू द फ्रेंड. आप ये 10 लोगों को रेफर करो या आप अपने फ्रेंड्स को रेफर करो तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, राइट? नाउ द अनदर थिंग इज फीडबैक लूप्स. अब फीडबैक का मैंने आपको पहले ही बताया कि आप रेगुलरली या वीकली कभी भी अपने कस्टमर से एंगेज करेंगे तो काफी अच्छा पॉइंट काउंट होता है, बिकॉज ये 2 वेज में एक्ट करता है. ये बिल्ड करता है आपका रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, and second, it can also give you the feedbacks to improvise your product or service. अगर किसी कस्टमर ने आपने कोई एक सर्वे डिजाइन किया एंड उनको दिया, अब उस सर्वे में उन्होंने बता रखा है कि ये प्रोडक्ट इज वेरी वेल एफिशिएंट एंड हेल्प अस टू optimize or to enhance our business services and all, राइट? बट आपको ये वहां पे उन्होंने बोला, जैसे हम गूगल में भी देख लेते हैं, गूगल रिव्यूज में भी वो आपको रिकमेंडेशन दे सकते हैं. तो नाउ रिकमेंडेशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू इम्प्रोवाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो ये आपके फीडबैक के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है. नाउ introducing the CRM systems. So generally CRM is a game changer in tracking your customer interaction and optimizing your sales process. CRM is kind of for the sales professional, it is bhagwan for your business. Like tools like HubSpot, Zoho, Salesforce, it can help you to manage customer data and also improvise your interactions with your customer. So there are three CRMs that we have listed down here. First, Zoho CRM, HubSpot CRM, and Salesforce CRM. So Zoho CRM, what it can help you with? So it can help you to manage leads, automate sales process, and improve your customer engagement through customizable workflows and integration. Zoho CRM आपको काफी चीजें प्रोवाइड करता है, आपके लीड्स भी मैनेज करता है, आपके सेल्स प्रोसेस को काफी रिफाइन कर देता है, ऑटोमेट कर देता है, और आपके कस्टमर एंगेजमेंट को भी एनहांस कर देता है बाय कस्टमाइज, आपके पर्सनलाइज वर्कफ्लो को इंटीग्रेट करके. नाउ द थिंग इज, आई हैव नो अबाउट अ प्लेटफॉर्म मैनीचैट. आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में आपके पास काफी रील्स आती है एंड द कॉल टू एक्शन इज कमेंट डाउन दिस वर्ड, कमेंट डाउन फॉलो, कमेंट डाउन अथॉरिटी, एंड इमीडिएटली आपके पास लिंक आ जाता है. तो आपको क्या लगता है वो इमीडिएटली नोटिफिकेशन आई, वो पर्सनलाइज करके? नहीं, ऐसा नहीं होता. एक टूल है मैनीचैट, वो ऑटोमेट कर देते हैं, देन वो ऑटोमेट करके वो वर्ड लिख देते हैं और मैनीचैट से वो लिंक डायरेक्टली उनके पास चले जाता है. सो दे आर प्लेथोरा ऑफ tools like that. Now moving forward for HubSpot. HubSpot can simple and streamline your sales and marketing and customer service efforts. It is a very easy to use platform. आपको ये interactions और managing pipelines and nurturing in your leads, इन सब में HubSpot आपके लिए काफी helpful करता है. Now the last one, Salesforce. It is the powerful tool for managing your customer relationships, tracking your sales opportunities, and automating your workflows. All while offering all this, it can also deeply customize your business and move you towards this scalability.
Salesforce be I believe that most of the founders have been using these CRM systems, and you can use the CRM to track where your leads are in the sales funnel, आपके inactive leads क्या हैं, customer relationship management आपका क्या है, right? And after uh, leveraging the CRM system, you can measure your sales performance. How? Move to this last slide. Yes. So in the business, data driven sales strategies are essential for growth. Data driven sales, not only the sales strategies, but data driven and research backed इंफॉर्मेशन ऑलवेज हेल्प यू. आप अपनी गट फीलिंग पे कोई भी अपना बिजनेस का डिसीजन नहीं ले सकते. हमेशा इट शुड बी वेल data driven. It should be of credible research. Research आपको चाहिए होती है हर एक प्रोसेस में, to analyze your customer, to analyze your sales, to analyze your market, right? So by measuring it, how you can measure your sales performance? There are three ways: conversion rate, customer acquisition cost, that is CAC, and customer lifetime value, right? So what is customer conversion rate? Conversion rate क्या होती है? Percentage of all leads that becomes eventually your customer, right? Customer acquisition cost क्या होती है? How much you spending to acquire a new customer, कितना आप पैसा लगा रहे हो एक वो कस्टमर को, मतलब जो भी आपके स्पैन ऑफ कस्टमर है उनको अपने बिजनेस में लाने के लिए. And customer lifetime value, the total revenue you expect to earn from your customer during the lifetime. Okay, and there is a one prenom that if your CAC, आपका कस्टमर एक्विजिशन अगर हाई होगा तो इंडिकेट करता है कि आपको और मार्केटिंग एफर्ट्स में आपकी रिफाइनमेंट होनी चाहिए, आपको और स्ट्रैटेजीज करना चाहिए, राइट? और अगर आपका कन्वर्शन रेट्स आर लो, ये इंडिकेट करता है कि आपको अपनी सेल्स पिच या अपना कस्टमर एंगेजमेंट और अच्छी तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए. In English, it means like if your CAC is high, it may indicate that your marketing efforts need refinement, or if conversion rates are low, you might need to improve your sales pitch or a customer engagement. Now let's wrap it up with your case study or an example. Suppose हम एक SaaS startup का ही example लें which is struggling to convert their leads. Now what they can do? They can implement a CRM system and focus on personalized customer follow-ups. They can increase their conversion rate by 20%. क्यों? क्योंकि उन्होंने CRM सिस्टम को इंटीग्रेट किया, अपने फॉलोअप्स को पर्सनलाइज किया, कस्टमर से एंगेज किया, राइट? By optimizing this process and building strong relationship isn't just a good advice. It delivers tangible and fruitful results, which can surely help you to double up your revenue. To sum it up, sales or customer engagement are the backbone of the successful business. Now moving forward, I have the assignment for you to this week to apply in your whatever learnings you have gained to optimize your sales funnel, implement a customer engagement strategy, and practice your sales pitch. And if you need my help, you can always connect it to me through LinkedIn and all. Remember, the goal is not to just sell, to build you the long-term relationship with your customer. Again, a cliche line: treat your customer as a king. Thank you. Thank you so much, Aarushi, and this is very knowledgeable and wonderful session from your side. I hope all the knowledge and all the points are clear to everyone. So, some questions from my side also. Uh, like, Yeah. uh, what strategy can startup use to differentiate themselves in the competitive market and retain customer loyalty? मतलब अगर same platform और same टेक सभी स्टार्टअप्स यूज कर रहे हैं, तो स्टार्टअप्स कैसे अपनी चीजों को थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं? So, firstly,
आप लोगों ने देखा होगा इन पिच डेक्स, अगर इफ यू डू हैव नो नॉलेज अबाउट दैट, वी बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, राइट, in which competitive analysis how you are better than your competitors. Now we need to stand out as better as our competitors, and how we, by offering a quality over our products, right? अब generally अनिल आपका ये क्वेश्चन है कि मेजरली ऑलमोस्ट ऑल द फाउंडर्स जिनका ये बिजनेस होता है, सास ही अगर हम ले लें, ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग द CRM, राइट? बट आपके कस्टमर्स, जो मैं मेन फोकस कर रही हूँ, बिल्डिंग योर कस्टमर रिलेशनशिप, राइट? CRM हर कोई यूज कर रहा है, बट कितना आप अपने कस्टमर से एंगेज हो रहे हो, कितना प्रोडक्ट अपना क्वालिटी कर रहे हो, कितने ऑफर्स उन्हें दे रहे हो, पर्सनलाइजेशन, Yeah, exactly. एंगेजमेंट, राइट, इट मीन्स अलॉट विद देम, राइट? आप जितना कस्टमर्स को प्रायोरिटाइज करोगे उतना कस्टमर रिटेन होंगे, आपकी रिटेनर मेथड आपका बढ़ेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर बनेंगे, आपकी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ होगी, राइट? Right. कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करना इज नॉट जस्ट लाइक कि आपने मेंटेन कर लिया, वो आपकी मार्केटिंग में भी बहुत हेल्प करता है. वर्ड ऑफ माउथ is that strategy. So word of mouth strategy you can apply while building up your customer relationship, right? Strategy, other strategies you can use by building up your marketing, by creating a awareness. Market research बहुत important होती है while analyzing your business, analyzing your customer, validating your idea. तो जब आप कस्टमर को एनालाइज करते हैं, उनके पेन पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, तब आप जानते हैं कि अच्छा ये इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट इनके लिए क्या ऐसा कर सकता है जो इनको बेनिफिट और ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो. तो वो चीज को आप एम्फोसाइज करके अपना एक वीडियो कंटेंट बनाएं, सो दैट दे कैन अवेयर अबाउट दैट, और ये सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें, सो दैट Okay, कैन okay. ऑल्सो डिफरेंट. Yeah, and one more thing that इस सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट करता है स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें सेल्स और मार्केटिंग के लिए, बिकॉज yeah, because we are always advised to the startup that कि आप सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, डेली रूटीन पे आप अपनी पोस्ट को पोस्ट करो अपने प्लेटफॉर्म में. सो दिस इज आई थिंक अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. तो आपको क्या लगता है, क्या एडवाइस है स्टार्टअप्स के लिए कि वो कैसे सोशल मीडिया को या सेल्स और मार्केटिंग कर पाएंगे? अनिल, आई टोटली एंड एब्सोल्युटली एग्री विद यू. मैंने अपने पिच में भी आपको बताया था कि सोशल मीडिया इज एन एसेंशियल टूल फॉर ऑल द फाउंडर्स एंड देयर बिजनेस. ऐसे जैसे हम पता है कि फाउंडर्स इन अ बिजनेस अकाउंटिंग, आप ये चीज सीखते हैं कि फाउंडर्स और बिजनेस आर दी सेपरेट एंटिटी. फाउंडर बिजनेस नहीं है और बिजनेस आपका फाउंडर नहीं है. सिमिलरली गोज विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी इट अ लिंक्डइन, be it a Instagram, be it any platform, right? So आपको, as I stated one line, people believes in people rather than a product. आप एक फाउंडर हैं, आपके पे वो ज्यादा बिलीव करेंगे rather than your product that you are offering. तो आपको एक अपना अलग से पर्सनल ब्रांडिंग के लिए एक अलग से सोशल मीडिया बनाना पड़ेगा, और दूसरा अलग से आपके प्रोडक्ट्स का, राइट? जैसे आपका प्रोडक्ट है, सपोज लाइक मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ. आई एम अ स्टार्टअप मेंटर एंड हैज द एक्सपर्टीज इन मार्केट रिसर्च, डेवलपिंग द पिच डेक. तो मेरे जो टारगेट ऑडियंस क्या है, फाउंडर्स हैं, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स है, स्टार्टअप एनेबलर्स हैं, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, मेरा सबसे ज्यादा जो हब है, जो है, वो कहाँ मिलेंगे, लिंक्डइन पे मिलेंगे. सो आई एंगेज दम विद कि पिच डेक्स में क्या रिफाइनमेंट्स हो सकती हैं, मार्केट रिसर्च में आप क्या कर सकते हो. तो उनके पेन पॉइंट्स को मैंने एनालाइज किया और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी. हाउ? बाय पोस्टिंग इन लिंक्डइन, पोस्टिंग इन इंस्टाग्राम. बट आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा. मैं आपको ये नहीं कह रही कि हर जगह अपने प्लेटफॉर्म्स खोल लो, नॉट इन इंस्टा, नॉट इन लिंक्डइन, यू नॉट इन यूट्यूब. आप पहले एनालाइज करो कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है. अगर आपकी टारगेट ऑडियंस D2C, आपका कोई D2C का बिजनेस है, कस्टमर ज्यादा आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाइए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाइए. अब सोशल मीडिया मार्केट स्ट्रैटेजीज जो होते हैं, वो आपको एक टाइम लिमिट भी बताते हैं. आप खुद एनालाइज करिए. यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी आपका फाउंडर या कोई भी होगा, वो आपके मैसेजेस या आपके पोस्ट किस टाइम पे देखेगा, तो उस टाइम पे पोस्ट करिए. इंस्टाग्राम में ज्यादा अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है रात में, तो आप यू कैन पोस्ट योर मैसेजेस, योर पोस्ट कंटेंट इन
इंस्टाग्राम एट नाइट, और आप सुबह कर दीजिए, बिकॉज इंस्टा एल्गोरिदम वैसे ही वर्क करता है। बट बिफोर 5:30 आप लिंक्डइन पे पोस्ट करिए। आफ्टर 5:30 या आफ्टर 5 लिंक्डइन पे कोई इतना सर्व नहीं करता, बहुत रेयरली होता है, राइट? ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। Yeah, these are the things that you can really follow up. Okay. And what are the major mistakes done by startups according to you? Initially startups क्या mistakes करते हैं sales and marketing के लिए? So what is your सबसे point of पहले, view on that? दे डोंट वैलिडेट देयर आइडियाज, नॉट इन अ सेल्स एंड मार्केटिंग, बट जनरली अगर कोई अर्ली स्टेज फाउंडर है, वो अपने आइडिया को वैलिडेट नहीं करते, अपने मार्केट को वैलिडेट नहीं करते, मार्केट रिसर्च नहीं करते, कॉम्पिटिटर्स रिसर्च नहीं करते। उनके पास एक आइडिया आया, उन्होंने प्रॉब्लम सोची, ठीक है। आई ऑलवेज रिकमेंड एवरी फाउंडर्स, एवरी अर्ली स्टेज फाउंडर, कि आप वो प्रॉब्लम से अपना आइडिया जनरेट करें, वो प्रॉब्लम से बिजनेस जनरेट करें जो आपका पैशन है। व्हाई? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर आपको उसको हाइट्स पे लेके जाना है, अगर आपको ऐसे करना है, तो दैट इज नॉट फॉर यू, राइट? इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म जर्नी, राइट? सो लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए आपको ये सोचना होगा कि बिकॉज देयर विल बी अ मंडेन टास्क, वो टास्क रिपीटेटिव होते रहेंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद मुझे यही काम करना, ऑब्वियसली इनोवेशंस होंगे, आप कुछ अलग अलग पिवट करते रहेंगे, बट यही इसी फील्ड में काम करना, तो उसमें इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। ए नाउ दी दिस ये गलती बहुत मैंने फाउंडर्स को देखा है, वो कोई भी प्रॉब्लम उनको मिली, उसी पे वर्क करना स्टार्ट कर ले जाता है। अब सेल्स और मार्केटिंग बेसिकली इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने कस्टमर, सेल्स कर किस लिए रहे हैं? कस्टमर्स के लिए। करेंगे किससे? कस्टमर्स के लिए। मार्केटिंग, marketing leads to your sales. They don't analyze the platform, they don't analyze their strategies, they don't analyze कि सेल्स हमें करनी है कस्टमर से। तो जब आप कस्टमर का पेन एरिया नहीं जाएंगे, आप कस्टमर के पास जा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, वो नहीं लेगा, राइट? आपको अपनी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी मार्केटिंग में, मार्केट में। कैसे? मार्केटिंग करके। आजकल सोशल मीडिया ही बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग टूल में आज सोशल मीडिया ही हो रहा है। अगर आप बाहर भी जाएंगे, वो बिल बोर्ड्स, पैम्पलेट्स आर ऑल द आउटडेटेड वंस, राइट? वो इतना चलते नहीं है, राइट? तो आपको अपनी पहले टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी होगी। सपोज किसी के टारगेट ऑडियंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ही हैं, राइट? इन्फ्लुएंसर्स ही है, मैंने वो एक एग्जांपल दिया था predis.ai का, ठीक है। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी predis.ai ने आइडेंटिफाई करी कि भाई इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपने पोस्ट कनेक्ट करने में, राइट? तो वो क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी, कैनवा, हूट सब एक जगह ले आए, जिससे वो अपना सोशल मीडिया अच्छे से मैनेज कर सके। तो आइडेंटिफाइंग योर कस्टमर्स इज रियली क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट पार्ट। ये गलती बहुत फाउंडर्स करते हैं, अपने कस्टमर्स की नीड नहीं समझते। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में भी आपको ये देखना होगा कि कौन सी मार्केटिंग आपके लिए इफेक्टिव होगी, राइट? अगर आपके फाउंडर्स हैं, तो आप लिंक्डइन पे पहले अपना स्ट्रैटेजाइज करिए। और स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस यू कैन आल्सो डू। अटेंड वेबिनार्स, अटेंड इवेंट्स, जाओ, जाके बात करो, कम्युनिकेट करो, लोगों से जानो, बिकॉज अकेले आप सब चीज नहीं कर सकते। पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन इज मच नीडेड। सो दीज आर द Very true. So all the startup who are watching this session, so please concentrate all the things which are mentioned by the Aarushi. So I just would like to say thanks for everyone for being a part of today's session on sales technique and customer engagement. So a special thanks to Ms. Aarushi ji for sharing her thank you. expertise and offering such valuable insight for startup community. So we hope you found this session informative and leaving with actionable strategy to enhance your sales approach and foster a strong customer relationship. So thank you once again, and we look forward to seeing you at our upcoming events. So thank you, Arashi. Thank you so much for your valuable time for us. Thank you so much, thank you everyone.